Now, everybody in the world who loves Ranbir Kapoor would always want to play his love interest. How was it playing his sister? I had to convince myself कि यार रोल तो बहुत बढ़िया है. I would have भैया never बुलाना said no पड़ेगा. यार, लेकिन भैया बुलाना पड़ेगा. You are the reason of all the violence in the film Animal. हो सकता है पर हाँ वो एक कैरेक्टर है जो मतलब जिसके साथ ये सब हो रहा है और एक भाई अपनी बहन को की प्रोटेक्शन के लिए ही उस हद तक जाता है. We have to ask you this. Were you okay with the portrayal of women showed in the film? या फिर the alpha man definition जो बताया गया था. क्या you as an actor and you Saloni as Saloni were okay with it? वो सिनेमैटिक प्रेजेंस के लिए, लेकिन वो जो ऑडियंस फील करती है उस समय, आपको देखना चाहिए ऑडियंस के रिएक्शन जब वो बैठ के वो सीन आता है. People have loved it and how he's devised everything in that scene. It is cinematic and it's for the film, it's for the purpose of that character. If you want to learn things, you listen to podcasts, you watch documentaries. How are your family and friends and your fans reacting to this? Oh, they're loving it. Everyone's like, animal ki behen, itna right? Hi, this is Saloni Batra and you're watching me on Bollywood Hungama. Saloni Batra, welcome to Bollywood Hungama. How are you doing? I'm doing very, very well and thank you for having me. I'm really, it's my pleasure to be here. ये एनिमल पिक्चर से पहले आपकी मुस्कुराहट और अभी की मुस्कुराहट में कुछ डिफरेंस है? काफी ज्यादा मैं कहूँगी. कब पहले थोड़ी बहुत आती थी, अब दिल खुल के आ रही है. वाह वाह वाह. How does it feel? How is it all sinking in? It's very overwhelming. I am just pinching myself every day because these are my dreams coming true right in front of me. So every day I'm in disbelief, but I'm like, oh my God, it's actually happening. So yeah, that's how my days are going. So right now. in the film, there are so many important characters. One, of course, being you, Reet, and कितना प्यारा नाम है. I believe that this was a name that you suggested. Yeah, we were actually sitting for readings और name finalize नहीं हो पा रहा था. हाँ. उन्होंने रखे थे 2-3 नाम और जब मैंने कैरेक्टर पढ़ा तो मुझे लगा कि जो इस कैरेक्टर के साथ हो रहा है, जो भी इसके लिए रीत काफ़ी अच्छा रहेगा बिकॉज इट्स लाइक जो चला आ रहा है औरतों के साथ ऐसा कुछ थोड़ा, तो मुझे लगा रीत बढ़िया रहेगा नाम, तो मैंने सजेस्ट किया एंड दे वर रियली हैप्पी एंड सर रियली लव्ड इट. सो आई एम थैंकफुल टू हिम टू टेक माई सजेशन एंड डू दिस. Now, everybody in the world who loves Ranbir Kapoor would always want to play his love interest. How was it playing his sister? I had to convince myself कि यार रोल तो बहुत बढ़िया है. I would have never said no यार, लेकिन भैया बुलाना पड़ेगा. मैंने सर को भी बोला था पहली मीटिंग में एक्चुअली. मैंने कहा सर मैंने तो रोमांस करना था, सब लड़कियां पूरी दुनिया यही चाहती है. पर आई एम सो थैंकफुल उन्होंने मुझे वो पार्ट दिया यार. मतलब आई कुडंट हैव हैड इट एनी अदर वे. द वार्मथ एंड द वाइब दैट आई गॉट ऑन सेट फ्रॉम रणबीर एंड सर व्हाइल प्लेइंग दैट पार्ट वाज जस्ट फिनोमिनल. सो आई डोंट थिंक I could have had it any So other tell way. us, Saloni, how were you approached for this role? Actually, sir had seen my work, my previous work, which is Sony and Tesh, and he really liked it, thankfully. And उन्होंने notice किया और उन्होंने मुझे meeting के लिए बुलाया. और जब मैं गई तो वो चाहते थे कि मैं एल्डर वाले पार्ट्स प्ले करूं और यंगर कोई और करे. पर जब मैं उनसे मिली, आई हैड ट्रांसफॉर्म्ड अ लिटिल बिट. आई हैड लॉस्ट लॉट ऑफ वेट. आई वाज अ बिग गर्ल बैक देन. आई हैव हैड माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एज वेल. सो व्हेन ही मेट मी, ही टोल्ड मी दैट oh, you can play the younger parts to the eldest parts. And I was like, sir, that is a dream of mine, of any actor actually. Right. That's a dream, to be able to play all different sorts of parts. And he had the confidence in me to give me that, and I'm really grateful and thankful. I'm sure that the looks might have taken a while to come through because एक school college का look है. तो कैसा था आपके लिए? What did you enjoy the most in this entire process? I actually enjoyed the whole process यार, because एक तो इतना बड़ा मौका मिल रहा था करने का, और फिर 3-4 बारी हमें लुक टेस्ट करने पड़े कि यंग लुक में बड़े लंबे बाल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, और चश्मे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, जीन्स पहनी होनी चाहिए, कपड़े वो जूते पहने होने चाहिए, चप्पल. सो देयर वाज अ लॉट. देन इन द 60th बर्थडे पार्टी सीक्वेंस व्हेन आई एम अ लिटिल ओल्डर, देन क्या साड़ी पहननी होनी चाहिए, सूट पहनना होना चाहिए, कलर्स,
hairdo. It was very, very important to, show that gap. So sir took like a lot of time to decide. We used to have photo shoots after every look test. 3-4 times we did that. So it was a process, and I really, really enjoyed, actually. It was See, now I have a theory that you're the reason behind all the violence in the film. Because बचपन में अगर आपने बताया नहीं होता रणबीर कपूर को तो वो उस क्लासरूम में नहीं जाते, उनको पता नहीं चलता कि गन की क्या कीमत है. फिर आपने शादी भी ऐसे इंसान के साथ की जिसके साथ रणबीर कपूर. तो ये थ्योरी के बारे में क्या कहोगे? डू यू थिंक इट्स राइट? हो सकता है पर हाँ, वो एक कैरेक्टर है जो मतलब जिसके साथ ये सब हो रहा है, और एक भाई अपनी बहन को की प्रोटेक्शन के लिए ही उस हद तक जाता है. शायद वो शुरुआत है और एक टर्निंग पॉइंट भी है उसके जीवन में. एंड ऑल्सो दैट ही इज वेटिंग फॉर द लव ऑफ हिज फादर ऑल द टाइम, लाइक ही बचपन से उसको नहीं मिला है वो प्यार. तो वो भी एक बात है. तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इस वायलेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं. टेक थोड़ा क्रेडिट ना. हाँ, मैंने किया है. मेरी वजह से हुआ है. मेरी वजह से. बट द फर्स्ट शॉट दैट वी सी इज ऑफ द टू ऑफ यॉल फाइटिंग एज ब्रदर सिस्टर. आपके लिए कैसा था ये शूट करना? वर देयर एनी चैलेंजेस व्हाइल शूटिंग अ सीन विथ अ सुपरस्टार लाइक रणबीर? यार पहला दिन तो बहुत ओवरवेलमिंग था, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था. मैं गाड़ी में, हमने वो कॉलेज वाला सीक्वेंस शूट किया था, सो आई कुडंट बिलीव दैट आई एम सिटिंग राइट बिसाइड्स रणबीर कपूर इन अ कार प्लेइंग हिज सिस्टर, एंड आई एम अबाउट टू स्टार्ट acting with him, which is something I love. So it was very, very, I was in disbelief. First of all, I had to pinch myself to tell myself, oh my god, you're here. Then I had to remind myself that he's playing my brother, so you have to, act now, come on. He's a superstar, but you can calm down. But he was kind enough to give me that warmth and vibes. Like it really felt like family. It felt like home. He was into the process all the time. वो हमारे साथ बहुत बार रिहर्स करते थे, तो सारे इंटेंस सीन्स थे. ही वॉज ऑलवेज प्रेजेंट. और एक दो बार मुझे दिक्कत भी हुई कि मैं आगे कुछ समझ नहीं पा रही थी, और उनको ऐसा लगा, तो मैं बहुत ही परेशान थी. ही जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ सजेशंस, स्पेशली इन दैट फाइट सीक्वेंस दैट वी हैव when I'm calling the father after I've been eve teased. तो मैं अटक रही थी और मेरा फ्लो नहीं हो रहा था सीन. तो उन्होंने बस आके एक चीज़ बोली कि don't act like you know I'm going to do this later. And I was like, oh yeah, that makes sense. And I just caught on to that, and the scene just took flow, and I was really, really grateful in that moment कि thank God इन्होंने मुझे बता दिया. तो उनके experience also mattered, and the other scenes also. He has rehearsed with us like 35-40 times at a stretch. He would just go on till the lines would actually become a part of our body, and then we would be ready to act. So I'm so glad that I got co-actors like him and Siddhant and Anil sir and all of these people, and a director like Sandeep sir who was guiding us, who was there to tell us ki this is what I want. He's actually very clear. He's so passionate and clear about his vision that he really helped us कि देखो मुझे सीन में ये चाहिए, आपको अब ये डिलीवर करना है. So that also really makes a difference to an artist's performance. As such, इस फिल्म में जब भी दिखाया गया है that there's something off between you and your husband. There were very small hints that were thrown. But as an actor, did you have a backstory for the character of Reet कि what must be happening जब आप घर पर हो अपने husband के साथ? या डेफिनेटली यार. बैक स्टोरी के बिना मुझे लगता है कि एक्सप्रेशंस और जो आप बोलना चाह रहे हो थोड़ा फ्लैट हो जाता है. तो बैक स्टोरी मुझे लगता है कोई भी कैरेक्टर हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आई थिंक इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. सो सिद्धांत एंड आई हैव सैट एंड डिस्कस्ड कि क्या होता होगा, ऐसा क्या है कि रीत इज स्टिल विद द हस्बैंड, व्हाई इज शी स्टिल विद वरुण, एंड देयर हैज टू बी अ रीजन टू इट. इट्स जस्ट नॉट. What was your reason? Would not like to disclose that, because it was like a full personal this thing that ऐसा सोचेंगे ऐसा करेंगे. But somewhere like the husband supports the wife, right, but he also goes to lengths which are not right and does things. But the love between them is so much that the wife cannot see beyond it. That's the problem. That she cannot see past it, and then when she actually realizes and gets to know what he has done is when she realizes, oh my god, why was I here in this relationship with this man? But sometimes when you're in love with the partner, you really can't see beyond things. So yeah, we did have a huge discussion about that, and that is what I think helped us
take the scenes forward and give those little small nuances that we had. We have to ask you this: were you okay with the portrayal of women showed in the film, या फिर the alpha man definition जो बताया गया था? क्या you as an actor and you Saloni as Saloni were okay with it? I'm an actor and I'm a facilitator. I'm an artist. I'm here to be a part of storytelling. Okay. We all, I feel, Sandeep sir, Ranbir, everybody as artists, we are here to entertain people. And we're rightly doing that, as you can see. People are loving the film, they're appreciating everything. How sir has put everything together, what people are feeling when they're sitting in the theatre and watching the film, with the background score, with the dialogues, with whatever's happening. Of course, the characters are flawed, but you make stories on flawed characters. These are inspirations, and hence you put them on screen to show them to the audience to sit and enjoy in a theatre. And so he is so legendary with his craft, with his filmmaking, Sandeep sir, that he knows how to reach the audience, what emotion I want to touch, what I want to say about this character. Obviously, a character who's not gotten love from his father is going to be flawed, no. And when we write stories, we always get inspired by real characters in life. एंड कहीं से ये आता है और फिर हम उसको सिनेमा में डालते हैं म्यूज़िक के साथ, थोड़ा सा कहानी बनाते हैं, थोड़े फिक्शनलाइज करते हैं, ये थोड़ी कि कोई सच्ची कहानी बता रहे हैं. Now it's about also the audience to understand what is right and what is wrong. We can't be sitting and preaching ना सब. पर शायद ये एक नेचुरल चीज़ होती है कि हम एक फिल्म से जब बाहर आते हैं तो कुछ मिनटों के लिए हमें लगता है कि हम उसी दुनिया के हैं. शायद हम उस फिल्म के एक्टर है या एक्ट्रेस है, भी हमारा हाव भाव भी चेंज हो जाता है. There is like a scene that has been spoken about on social media, which is the gun, taking the gun into the college scene. Do you feel that that was just pushing the envelope a little too much? Probably because I am agreeing with you that it's a सिनेमा की तरह देखो, लेकिन कभी कभार उसका प्रभाव कैसे ना कैसे इंसान पर पड़ जाता है. What are your thoughts about it? वो जो सीन है वो वही सिनेमैटिक प्रेजेंस के लिए है. मैं ये दोबारा बोलना चाहूँगी, वो रियल लाइफ में नहीं होना चाहिए और नहीं होता है. ऐसे कोई घर घुस के ऐसे नहीं गोली नहीं मारता है ना, आपने भी नहीं देखा होगा कभी भी. पर वो सिनेमैटिक प्रेजेंस के लिए, लेकिन वो जो ऑडियंस फील करती है उस समय, आपको देखना चाहिए ऑडियंस के रिएक्शन जब वो बैठ के वो सीन आता है. People have loved it, and how he's devised everything in that scene. It is cinematic and it's for the film, it's for the purpose of that character. So I don't think people should take back wrong things from it. When also you get out of the film, you are seeing this character's flawed, he's gone through so many things, and at the end they are showing na कि he has lost out on so many things. तो आपको ये भी तो realize होना चाहिए ना कि अगर आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो लाइफ में तो आपके शायद ऐसे रेपरकशंस हो भी सकते हैं. तो आपके ऊपर है यार कि आप कैसे परसीव कर रहे हो. आप एंटरटेन होने जा रहे हो. Everybody is loving the film. They have goosebumps while watching certain scenes. They are crying, they are laughing, and it's a full entertainment package. I mean, what more could you want from a film? If you want to learn things, you listen to podcasts, you watch documentaries. But if you're going to get entertained, and the kind of numbers we are getting, thankfully, because of Sandeep sir and his vision about what he wants to show, so much passion, so much clarity, I really respect that. And as an artist also, I have worked with a lot of people, but one thing I loved about him, that he was always into his work. He was always thinking about it. He would see me, he would cross me anywhere, he would come to me and be like, यार कल ना सीन में ये करेंगे और ऐसा होगा और ऐसा होगा, and what did you think about what happened today? So much passion, so much clarity. What else would you want from an artist? I mean, I was really, really thankful and grateful to be a part of his canvas, honestly. Another superstar that you worked with is Anil Kapoor. Yes. How was it? How was his energy on set? He was like a buddy to all of us. He was a friend on set. His energy was always up. He was always like glowing and exuding that vibrance from him. तो हमसे आके मतलब हमें डर लगता था कभी कभी सेट पे कि सर बिजी हैं, हाय नहीं बोलते. वो खुद आके कहते थे यार हाय नहीं बोला आज, तो सर आप बिजी हो, हमें लगा अभी आएंगे आप. इतने सीनियर्स के साथ यू गेट अ लिटिल ओवरवेल्म्ड समटाइम्स, बट ही
made us feel at home, and everyone actually was like a family on set, from the writers to the director to the DP to everybody. It was a lovely experience. Another man who's just creating, a turmoil on social media is Bobby Deol. Oh, But yes. you didn't have any scenes with him. Yeah, I wish I did though. He looks so good. What he's done is so Did fabulous. you get to meet him? Did you speak I to did, him? I did. He's such a grounded, humble person. Oh my God. I really cannot believe that everybody I met on this set was a superstar. They were seniors, they were legends in their own right, and they were so grounded and humble. I think that's what makes all of them what they are today. Like Bobby sir, Anil sir, Ranbir, Sandeep sir, everybody. Uh, I have no words. I'm speechless, really. When I met Bobby sir also, he spoke to me सामने से, and he had seen my film Sony. और उन्होंने मुझे आके बोला कि खुद ही आके बोला कि you did that cop film ना सोनी करके. मैंने कहा हाँ जी सर, आपने देखी है. मैं बिलीव ही नहीं कर पाई. उन्होंने खुद देखी और उन्होंने मुझे खुद आके बोला. तो thankful for all this, yeah, honestly. Well, ये बताए Saloni, that what would you say is your most favorite memory in the making of Animal, or a scene that is the most dear to you? Actually, I love that gun वाला scene, क्योंकि मुझे वो बचपन का रोल प्ले करने का मौका मिला. Okay. वो जो उसमें प्रोसेस था कि मेकअप हुआ, लंबे बाल पहने, dressed up as a little younger than what you are. Then also when I dressed up older than what I am. So those transformations for me were the process was very enjoyable. क्योंकि फिर थोड़े dark circles करे, old लगने के लिए, young लगने के लिए थोड़ा अच्छा वैसा वाला मेकअप किया थोड़ा. तो वो बहुत अच्छा था. और फर्स्ट डे, as I mentioned, जब मैं रणबीर से मिली थी, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था. वो तो मेरा हाईलाइट पॉइंट था. फिर हमारी लड़ाई सीक्वेंसेस, मुझे एक्चुअली लगा कि मैं अपने भाई से लड़ रही हूँ. तो वो कमराडरी जो करने का मौका मिला संदीप सर की वजह से, ही हैड ऑल द ट्रस्ट इन मी. आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर हिम टू हैव ब्लाइंड फेथ एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने मेरा पिछला काम देख के बुलाया था और बोला था कि आप करो ये. और इतने इंटेंस सीन्स थे कि अगर मतलब उन्होंने ऐसा ब्लाइंड फेथ शो किया मेरे में कि ये कर लेगी यार, तो वो करने में भी मज़ा आया. और वो जब भी डायरेक्शंस भी देते थे, तो आई थिंक ऑल इन ऑल आई कांट से वन डे, और बिकॉज 20 दिन शूट किया मैंने, तो एवरी डे वॉज सरियल, एवरी डे वॉज ड्रीम लाइक, एवरी डे वॉज लाइक ये मेरी रियलिटी है. आई टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड माई सेल्फ. सो आई थिंक every day for me on that set was very, very special. Is there any scene in the film that you kind of felt a little not so okay with? Yeah, as I rightly said, I as an artist and an actor, I cannot judge my character. Okay, right. I don't judge other characters as well, because we're a part of a story. Yeah. We're trying to tell you something in a story form. So I wouldn't want to judge anybody, honestly. Fair enough. Yeah. How are your family and friends and your fans reacting to this? Oh, they're loving it. Everyone's like, animal ki बहन, इतना ज़्यादा. Everyone's caught on to animal ki बहन. Everyone's calling me that everywhere I go. Like yesterday I went to the Grazia event, and there also people like animal की बहन आ गई, animal की बहन आ गई. मैं बैंड्रा में थी एक दिन, तो लोग सड़क पे बोल रहे animal की बहन. तो मतलब जो recognition मिल रहा है सर की वजह से, इस फिल्म की वजह से, टी सीरीज़ भूषण जी की वजह से, बहुत ही सरियल है. और एंड माई पेरेंट्स वर हियर स्पेशली फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म, सो दे वर ऑल्सो, दे कुडंट बिलीव इट. फर्स्ट दे वर इन डिसबिलीफ. तो उन्होंने फिल्म भी वैसी देखी, ऐसे ऐसे मुझे बाद में कहते हैं यार दोबारा देखनी पड़ेगी, हम ना फिल्म ठीक से देख नहीं पाए, इतनी खुशी हो रही थी. तो एवरीवन इज लाइक ओवरवेल्म्ड. Lovely. Hi, this is Saloni Batra, and you're watching me on Bollywood Hungama.